हेलो व्यूवर्स। आज हम बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैक ऑपरेशंस को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट दिस टाइम यूजिंग टेम्पलेट, अ पावरफुल टूल इन सी प्लस प्लस, जो कि हमें क्या फैसिलिटेट करता है कि हम अगर बार बार एक कोड लिखते हैं, सेम पीस ऑफ कोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए हम बार बार एक कोड लिखना पड़ता है, तो टेम्पलेट हमें अलाउ करता है कि आप एक ही टेम्पलेट बना दें और बार बार जो हम कंटिन्यूसली कोड लिखते हैं, रिपीटेड कोड लिखते हैं, तो वो फिर हमें नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग में देख लें, अगर हम एक फॉर एग्जांपल सिंपल कुछ नंबर प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं और कुछ या डबल वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें 3 फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं फंक्शन टेम्पलेट के थ्रू इसको करना चाहता हूँ, तो सिर्फ मुझे एक ही फंक्शन टेम्पलेट बनाना होगा और मैं रन टाइम पे जो भी वैल्यू टेम्पलेट्स को भिजवाऊंगा, तो टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली अपने टाइप को उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे स्टैक ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल मैं स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। आई वांट टू इंसर्ट सम एलिमेंट इन द स्टैक एंड देन वांट टू डिलीट some element. Now insertion, I want to insert integer element at the same time. If I want to insert string elements, character elements and double elements, I have to be defined a string class, class template, and the type of this class template will be automatically adjusted if I pass an integer value to the stick, if I pass string value to the stick, and so on. So let me quickly start and quickly implement. Here I have to define a macros, that is define stack capacity, that is 20 elements, 20 different types of elements I want to insert, and then a template, uh, template class, my class. Now inside the template, this is the template keyword, and this class template. Now class inside the template, and this template type or return type is my class, and this I want to define a class, that is my stack a class. So in the class private part, I need two types of variable, that is int top. If I want to find the top element of the stack, सिमिलरली मुझे ये टॉप एलिमेंट की ज़रूरत होगी जब मैं कंपेयर करूँगा या चेक करूँगा कि स्टैक मेरे पास फुल है या एम्प्टी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक अरे को भी यूज़ करूँगा, अरे टाइप ऑफ स्टैक, जिसके अंदर मैं एलिमेंट क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। लेकिन वो अरे मेरे पास क्या होगी, जो मेरे पास टेम्पलेट टाइप है माई क्लास, ये वो टेम्पलेट टाइप है, एंड दिस इज़ my name of array through which I can be inserted stack capacity. सो ये मेरे पास अब दो वेरिएबल्स आ गए, एक मेरे पास टॉप और एक मेरे पास अरे, लेकिन वो अरे किस टाइप का है, दिस अरे इज़ ऑफ टाइप ऑफ टेम्पलेट्स। अपनी आसानी पैदा करने के लिए कि अब इस अरे के अंदर अगर मैं इंटीजर वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, करेक्टर करना चाहता हूँ, फ्लोट करना चाहता हूँ, डबल स्ट्रिंग या वट एवर, सो जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये जो टाइप है टेम्पलेट टाइप, ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उस वही वर्जन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जनरेट करेगा। सो देन इन public part I have to define first why that is sorry public, and then name of the class is my stack, this is my constructor, empty constructor, and similarly if I want to push
element into the stack, void push एलिमेंट, और वो एलिमेंट किस टाइप का होगा, अगेन जो मैंने टेम्पलेट टाइप रखा है क्लास माई एलिमेंट। सो ये मेरे पास इफ आई वांट टू पुश सिमिलरली आई मस्ट डिलीट एलिमेंट। अब चूंकि मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे स्टैक के अंदर, इंटीजर भी होंगे, फ्लोट भी होंगे, करेक्टर्स भी होंगे। अब मैं जिस टाइप का एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, दैट मस्ट बी डिफाइंड थ्रू द टेम्पलेट टाइप, that is my class template type, and then void, uh, and then push element, sorry, void return type is this, and then pop element. So now the pop element means there are different types of elements: integer element in the stack, character element, string, or double elements of the string. So whatever types of elements I want to delete it, this type will decide it runtime. So now I'm using I want to check if I want to insert or delete that either stack is full or empty, then I have to be define if stack is full, uh, yes, stack is, yes, stack is full. Same like I want to check if I want to delete something is empty. These two elements, sorry, these two, just I want to adjust the screen resolution. Yes. Acha. Now these two elements, stack is full and stack is empty, means if I want to insert, I must check whether there is enough space in the stack. If I want to remove something, I must check that there must be some element in the stack. So this is my uh, member declaration part. Okay, now I have to be defined the top of the stack. Initially there is nothing in the stack, so I have to be defined that the top of the stack is -1. For this, template class, my class, my stack, uh, template type, that is my class, and then the constructor. Here inside the constructor I'm going to tell that top is equal to -1. So look at this now again. Template keyword, this is type of the template, class inside the template, and type of the class, my stack, name of the class, name of the class किस type का, of the template, and then scope resolution operator, and then my stack, because my stack is a constructor, and I'm going to define this constructor outside the class. I must use the scope resolution operator. And then type means type of the class individual मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि class is just like class template के अंदर है. So I have to mention complete template and then my class. So through this code I simply defined that whether I simply define the top element of the stack. Now to check, sorry, um, I want to push element into the stack. Again I have to define templates class, my class, and then void uh, my my template class, my class, and then void my stack, and then my class,
my class, stack my class, and then push element of which type of my class, and then my element. So my first element will be inserted. Now because this is a push element, I must have to check that whether stack is full or not. Stack is full. Okay, if stack is full, then simply give me a message stack is full and overflow. So this is my if portion. Else, if the condition is not true, then what we'll do, then simply, okay, there's no need to write the else. If condition is false, then cout inserted element in the stack is, हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, that simply that message will be displayed, and then my element and end line, so that to check that after one element I have properly inserted the other element. Now I have to increase or simply top plus plus, and my stack array, because I have to be assigned the inserted element to my array top position, that is my element. So I have inserted first element, just I write a function through which I can now insert any type of element, that may be an integer, character, double, etc. What will happen uh, whenever I will call a push method from the main function, I have to pass a value. That value will be comes here and replace my element, and then my element will be inserted into the top location of the array. So this is my push operation. Now I want to delete something, but before deleting I must check whether there is an element in the stack or not. So I have to define template class my class, and then bool my stack my class, and then scope relation operator, and then stack is empty. If again I have to use the top variable. If top is equal to -1, then simply क्या कर लो, return 1, else return 0. So if there is element in the stack, then return 0 means element or there. If there is no element, then simply print this. Okay, now this condition will return me the status of the top element of the stack, that whether elements are present or not. Okay, then whether I have to push, okay, is empty. I have to check an empty condition, then push element. Yes, obviously I have to check whether stack is full or not. Yes, before the inserting push element I have to check there whether stack is full or not. For that purpose I have to define template
class my class bool my stack my class, and then stack is full। और इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, इफ टॉप इज इक्वल टू stack capacity -1, देन क्या कर लो, रिटर्न 1 कर लो, एल्स रिटर्न 0 कर लो। if return is 0, so that will simply give me whether stack is full or not। if stack is not full, then क्या कर लो, ये पुश ऑपरेशन आप परफॉर्म कर लो। सो इसके बाद जब मैंने ये चेक कर लिया कि स्टिक मेरे पास एम्प्टी भी नहीं है, देन आई हैव टू बी परफॉर्म अ पॉप एलिमेंट to delete element from the stack। So again for this I am going to define a template my class, and then my class my stack my class, and then scope operator, and then pop element, and then the function। so my class, the element that I am going to pop, so pop element is equal to my stack array, और जो उसका टॉप पोजीशन है वो क्या कर लो आप, पॉप एलिमेंट को असाइन कर दो, और देन जस्ट टॉप is equal to top -1। so top will be here removed, top element will be assigned to pop element, okay, yes, pop element, and then top will be decreased as accordingly, and then I have to return return this pop element, pop element। this is the pop element which I simply return। so ये मेरे पास return हो गया, this is that one। now basic operation are performed। now I want to return the top element। what is the top element, template class my class my class my stack, and my class scope inverter, and then top element, top element। so just give me the top element, my class top element is equal to my stack array, जो टॉप एलिमेंट है वो सिंपली क्या कर लो, माई एलिमेंट को असाइन कर दो, एंड देन रिटर्न टॉप एलिमेंट। मेरे पास जो टॉप एलिमेंट होगा वो मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने टॉप एलिमेंट को भी रिटर्न कर लिया, जो एलिमेंट मैंने डिलीट किया वो भी मैंने रिटर्न करवा दिया। नाउ आई हैव टू be define my main function and main, and then I have to be define the objects, and the name of my class is my stack। and now this is very important thing, if I want to insert integer type of data, then the object will be automatically changed uh, integer stack। similarly if I want to insert a string type of data, then string stack। in the same way if I want to insert double type of data, then double stack, and then my stack if I want to insert
character type of data, char stack. So these are basically I'm going to create object of stack class. Here I am declare object of type integer, of type string, of type double, and type character. Now I will call uh, so here first I want to insert integer stack object, then string stack object, then double stack object I will be inserted, and then lastly I will insert the character type of object. So simply integer stack dot push element, and this element is, let's suppose, 5. Okay, I'm going to copy this. I want to insert uh, 4 different elements, 10, 15, and then 20. So here I push the integer stack object, um, but custom integer entries. These are the user defined entries. Similarly, here in this case, now second one is the string. Yes, yes, string up. Now string type of stack object I want to insert string stack dot push element. There is a stack operation. Again I am using to that and then stack operation using class template and then mm, subscribe the channel please. Okay, here I have inserted the string type of data, and similarly if now I want to insert the double type of data, double stack dot push element, I want to insert 2.5, and I just want to copy for 2.5, 3.5, 4.5, and then 5.5. In the same way, uh, chars stack dot push element, that is here inserted a sorry, and then v, then I inserted b, and then c, and then d. So these are different types of element I have inserted. So if I run this program to look either there is any error or not, let me check. Okay, there is one error. What does this error? My class pop has already been defined. Where is this? Where this is defined? What does it call? My class, my stack, my class pop element white function template has already been. For pop function, I think this pop. Acha, yes, yes. Pop element. What does it mean? This is template of 2. Top element.
pop element. Here I'm going to just okay, pop element, my class top. Yes, 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 top element. This is not pop. This is top element. Now if I run this program, again there is an error. What type of error? My class, my stack pop element void function template has already been defined. Pop element again. What is this? Okay, let me check from here. Yes, this is the top in public part. If I look one push element and then stack, okay, and then push element and then pop element and then stack is full, stack is empty. Okay, okay, there is no function for that. Push element, pop element, and then top element. My class top element. So this is that. Then and first yes, after public part, this is my constructor. It's okay, and then stack is full. It's okay, and then push element. Okay, after push element, first I check whether that is not okay. After the push element, there will be stack is empty, to check whether that is empty, and then there is yes, stack is empty, and then the pop element. Okay, pop element. Okay, then this is called top element. Now I think if I run this program, yes, again there is an error. What type of error? Syntax missing before that. Yes, yes. Okay, now if we look at this program, um, inserted element stack is 5, 10, 15, 20. First I inserted 5 different elements, 4 elements of integer type. Inserted element stack is stack operation using class template. Subscribe the channel please. So then I inserted 4 stack object of string type and then double type and then character type. So if we look at this, we have defined a single template for insertion, a single template for deletion, but from the main function we are going to insert integer data, string data, character data, and double data. So this is the benefit of string, that any type of data I'm going to insert from the main function, the string automatically change its version and generate the required version in the object class, in the object code. Similarly, now if I want to push, I want to the element that is deleted. Okay, everything is pushed. The first element we want to delete from this. So cout
is element deleted from the stack is then we want to delete the double type of data, double stack, sorry, double stack dot pop element dot pop element. Okay, and then simply end line. Similarly, if I want to now integer type of data, cout element deleted from the stack is integer stack dot pop element. So if you look, at the end, if you look at this, element deleted from the stack is 5.5 and element deleted from the stack is 20. And now if I want to check the top element, cout the top element of the stack is string the stack, the top element of the stack is double stack dot top element. What will happen? I have to use here end line, and then I'm going to use here just to visualize the output. So if I look at now, the top element of the stack is 4.5 because I have deleted this element, then 4.5. okay, yes, if you look at this, element deleted from the stack is 5.5. ये जो लास्ट वाला एलिमेंट था ये हमने डिलीट किया, तो अब टॉप हमारे पास क्या आ गया 4.5। अच्छा, लास्ट एलिमेंट जो हमने फर्स्ट एलिमेंट डिलीट किया था, क्योंकि जो स्ट्रिक है वो फॉलो करता है फीलो स्ट्रक्चर को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सॉरी फीफो स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो पहला जो एलिमेंट हमने एंटर किया था दैट इज 5 पॉइंट सॉरी लास्ट इन, लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है लास्ट इन और लास्ट आउट। जो लास्ट इन होगा वो लास्ट आउट होगा। ओके जनाब, सो ये हमारे पास था टेम्पलेट्स, एरे के डिफरेंट फंक्शंस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया यूजिंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का जो बेसिकली फ़ायदा था वो हमारे पास क्या था कि अगर यहाँ पे हम देख ले तो हम यहाँ पे करेक्टर डेटा एंटर कर रहे हैं, यहाँ से हम डबल, यहाँ से हम स्ट्रिंग और यहाँ पे हम इंटीजर डेटा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने सिर्फ पुश के लिए एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि वहाँ से अगर मैं इंटीजर डेटा सेंड करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास टेम्पलेट टाइप है माई क्लास, ये मेरे पास टेम्पलेट टाइप है। तो ये टाइप ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से इंटीजर डेटा आ रहा है तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटीजर टाइप, अगर स्ट्रिंग डेटा आ रहा है एंड सो ऑन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आप में से अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।